Okay, so now let's discuss about Trump could strike Venezuela with F-35 soon. We already know a lot of things going on in geopolitics right now. As for Venezuela, I heard something about petroleum, right? Right now, it's all about petroleum. Whoever selling petrol and whoever has the most amount of petrol reserve, they are fighting with these countries. Just try to make their own dominance, just like USA trying to do. And CIA, we already know how this world works. Those who holds the power with, uh, nature resource of energy, who had more reserves, oil, they win the wars. And the way I thinking right now is that Trump really trying to damage or trying to change the resume of Venezuela, so he can have control over that specific region where the most oil reserve found in Venezuela, right? So let's see what this is all about, and we will talk about it more by watching this video. Donald Trump. But we also have to understand that this all of these are going on in 2015 is all about who is funding who and about oil resources. Even India right now, you guys already know, India also export refined oil, which is bought from Russia, right? So if India trying to enter in this market, like oil selling market, you know, so many much more powerful people comes in and play the roles, which can definitely hurt a country. Sometimes they try to exploit India, sometimes they try to change a resume, sometimes they bring illegal people in India, then try to manipulate the politician leaders, try to change the whole opinion of a media through social media also. Like we are discussing right now, but who knows, some people gain effect from social media, comment sections and others. If those guys doesn't go to Google search about all of these things, not only particular Google, they if they don't use common mind like logic, why is this happening in 2025 and why all of this suddenly came down in only just 6 months? You have to think it before commenting on it. Either go read every article and their details about it, what is happening. Watch some podcast, opposition and the which one you support. Watch both sides and think about it as a common neutral. What will be the benefit and what will be non-beneficial for our own country? Like for India, we have to say, because right now deep state is going very dangerous. Even USA fighting for with deep state in his own country. We don't know who support these. I don't think so. USA controls CIA, their agency. Let's watch first of all. बहुत ही जल्द ऑर्डर दे सकते हैं यूएस मिलिट्री को कि वेनेजुएला की धरती पर अटैक करना शुरू कर दो। ये बात रिसेंटली सीएनएन ने रिपोर्ट करी है कि ट्रंप आज के समय ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या ये जो कार्टेल्स हैं इनसाइड वेनेजुएला सीधा इनको टारगेट कर सकते हैं। सीधा सीधा यूएसए की एयरफोर्स जिस तरीके से ईरान पर स्ट्राइक करके आई थी, वैसे ही वेनेजुएला पर क्या यूएस स्ट्राइक करना स्टार्ट कर सकता है। इस बात को लेकर देखिए, सीएनएन ने कहा है कि जो यूएसए का मिलिट्री बिल्डअप आज के समय हो रहा है वेनेजुएला के आसपास, जो डोनाल्ड ट्रंप की लैंग्वेज है वेनेजुएला को लेकर, इससे साफ साफ दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्लान कर रहे हैं कि वेनेजुएला पर एक बड़ी स्ट्राइक ये करेंगे।
मैंने आपको रिसेंटली ये भी बताया था कि यूएसए ने अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम भी चेंज कर दिया है। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से हो चुका है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। ये जरा आप देख पाओगे इस तरीके से यूएसए में जो भी बिल्डिंग्स हैं वहां पर रक्षा डिफेंस जो ये वर्ड है ये हटाया जा रहा है, खुरेद के हटाया जा रहा है। इसकी जगह वॉर यहाँ पे नया वर्ड डाल दिया जाएगा। और आप देखोगे यूएसए ने अपने सरकारी हैंडल पर ये वीडियो भी करी है रिलीज। ये जो छोटी Although I knew about this, they were trying to change this name defense to war, but didn't know it became it's working like this fast. Like they are working on this topic this fast, like trying to clear it and then stick to war. सी वीडियो है कुछ सेकंड्स की है, देखिए। You know, we won World War I and we won World War II, not with the Department of Defense, but with a War Department. We're focusing our military on its core mission, crushing America's adversaries. I think right now I already checked the status about GDP and all. Like in 4 years, USA jumped to 4 trillion economy, something like that. But before this, they were faster. Right now, it's decreasing. Like in Trump regime, not in Trump, in every year they were just in every 4 years they were climbing at least 3 to 4 trillion dollars, something like that in economy. Before I check the fact, and I can also show you guys also, like you can watch it here. USA GDP status, right? So this was the status, and look at 10 to 5 trillion dollar economy. Watch closely. 2021, 23, 4, 5, 6, 7. In almost like 5 to 6 years, they cross $5 trillion economy. And watch here. $25 trillion. How much? How many? Like it started in 2017, 18, 19, 20, 21. It's exceptional, like $23 trillion. And then in 2020, uh, 22, it's became $26 trillion. 23 to $26 trillion from 2021, like $3 trillion growth rate. And here it goes something like this: 2022 to 2024, 23 to, I mean 26 to 29. Exceptional growth, right? It grows something like this. And China is also like, China here something happened between this, like 2021, because China heavily focused on military equipments rather than its economy. That's why it was constant at this time. After that, they start moving again. I think China can take over USA. Also, I will show you something from Wikipedia. As of 2025, it's became $30 trillion economy in 2025. That is, yeah, $30 trillion economy. And according to purchasing power parity, it's $30 trillion. Yeah. But right now, USA majorly focusing on increasing its military power. USA already had its budget like almost $800 billion to its military, but we already know its population going to down to hell. Also, its economy, maybe it touches $32 trillion more in 2026 to 2027, maybe 33, almost 34. That's max I can go. But as of right now, the current state is that is USA economy is crashing down. Although you won't see the side effect, but after few months you will see starting that statistics will be moving downwards, and it will only move downwards more.
it will increase a little bit more, but I think that will be the limit of a USA. But the China going according to it, I think they will catch up to USA in 15 years. In 2030, they will probably become like 25 billion, $25 trillion, something like this, China. And as of India, I think India will touch $10 trillion economy, according to what I understand, what I read. That is 2032 to 2035. It will be the time when we will be starting to say something to USA also. If that comes to $10 trillion, India will hold major power also, just like in our glorious day we hold. Although it's not that much, but we will still hold something. In China, China will take over. Something will happen. USA will trying to do everything it can. It already mentioned it. And all this deep state going on, China have no effect of this because they are CCP, one communist party, but still developing it. That one party can develop it. Just like North Korea, nobody can change its power. Nobody can change its regime according to the world. You already know what USA did in Myanmar. It's something you should have to check it out. USA is doing very very bad things. USA is trying to control everything. Myanmar, Cambodia, regime. In Myanmar, you already know what's going on. Like there are terrorist camps. Indian military trying to defend our northeastern border, Mizoram, Nagaland, and other parts of northeast India. They are trying to immigrate in India, right? And they are falsely using an agenda in Mizoram street also. There are lots of people I have seen from Mizoram. They hate Myanmar peoples and those immigration coming from them, coming from their land, like coming from their country. It's something we have to think about also. Like we are trying our everything, right? And in Myanmar was a Buddhist country, but I don't know what happened. Suddenly, all of those Muslim people are also trying to take those temples, and government try to change regime, try to change its meaningful state, and trying to convert it into a Muslim country. But that will never gonna happen. Even if it happen, there will be other sided also of Myanmar. They are literally fighting over it. Like civil war is going on between something like that. Then you have Cambodia, then you have Yemen, then you have Syria, then you have Iran, Israel, Palestine, Hamas. Everything is doing because of USA wants to be powerful in this century also. And he already did in past. He's trying to do it now again. USA is not anymore a powerful country, and it will never be. This is the one thing I can tell you. USA already had its own amount of share in 21st century. They already benefit a lot through wars, selling their equipments to Ukraine, making $800 million deals, $1 billion deal, $2 billion deals, just spending weapons, not trying to scale it down even a little bit, but just full scale. They are making profit out of it from both sides. They will do whatever it takes. Even European Union, like they are also bullshit people. We're in the business of war fighting. Department of War
हमारे सामने आज के समय एक बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा अग्रेसिव यूएस खड़ा है। मतलब एक ऐसा यूएस जो ऑलमोस्ट वेट कर रहा है कि आओ कोई लड़ लो मुझसे। मतलब ये ओपनली कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर 1 हम जीते थे, 2 हम जीते थे, और अब नाम भी चेंज कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ये देख रहे हैं? वी डोंट रियली नो, बट वेनेजुएला का केस अगर हम देखें तो लग रहा है कि ये In Venezuela, its regime is also like something which is holding its power illegally, I would say, and they really don't respect their own president or prime minister, whatever you say, that much, because he also like to dictatorship, something like that also going on in Venezuela also. देश People बिल्कुल are यूएसए के suffering. टारगेट में है। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक सवाल आएगा, मगर जो ये देश है वेनेजुएला, जिसके बारे में दुनिया भर में लिखा जा रहा है कि बिल्कुल F-35 वॉर प्लेन्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल यहाँ पे आज के When this guy, he like to dictatorship, something like that, and try to control it with military, its people. He's also a ready-made scumbag. समय स्ट्राइक करने का सोच रही है वेनेजुएला पर। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपके सामने प्लेनेट अर्थ, ये है हमारा प्यारा भारत, और अगर मैं बिल्कुल धरती की दूसरी तरफ देखूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और इधर आप देख पाओगे ये है वेनेजुएला देश। 2 करोड़ 30-40 लाख की आबादी है, ज्यादा बड़ी आबादी नहीं है वेनेजुएला की। आप अगर सोचकर देखें, यूक्रेन से भी काफी छोटी आबादी इस देश की है, और कई एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि वेनेजुएला में दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। कच्चा तेल सबसे ज्यादा वेनेजुएला में है, और यहाँ पे जो अभी के लिए प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, जिनको यूएसए यहाँ का प्रेसिडेंट मानता भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा करीब है चाइना रशिया के। ना एक टाइम पर ना, आज से कुछ साल पहले यूएस इतना खुलकर नहीं कहता था बाकी देशों को कि चाइना रशिया से रिलेशंस खराब कर दो या फिर रिलेशंस तोड़ दो, मगर अब हमने देखा इंडिया के केस में, हम अगर देखें यूएसए के जो ट्रेड एडवाइजर है खुलकर कहते हैं, यूएसए के कॉमर्स मिनिस्टर खुलकर कहते हैं कि भारत को ब्रिक्स को छोड़ना होगा, रशिया से अलग होना होगा, तभी हम मानेंगे कि ये Even in BRICS, the way he's saying like India should leave BRICS. BRIC was formed by these 4 countries. How can India leave? Like India is also main word in BRICS. BRI. I is gone, then there is nothing left. It holds major आज के population समय powers. इंडिया फ्रेंडली कंट्री है यूएसए का, तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर इंडिया जैसे एक बड़े देश पर यूएस ऐसी कंडीशन लगा सकता है, तो वेनेजुएला एक ऐसा देश जो बहुत ज्यादा करीब है यूएसए के, उस पर यूएस कितना ज्यादा कंट्रोल चाहेगा। और मुझे हंसी आ रही थी जब मैं वेस्टर्न न्यूज आउटलेट्स के आर्टिकल पढ़ रहा था ना, वहां पर लिखा तो है, वहां पर ये लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ट्रंप का एंड गोल क्या है। यूएसए ने रिसेंटली वेनेजुएला की ड्रग बोर्ड को बॉम्ब किया था। ये Yeah, they are trying to paste it with illegal stuff. I know this one also. And also trying to say that their government is oppressing people, something like that. And they need to be a freedom. And they are posing threat to US, something like that also. They are using these topics to cover it up, oil reserve war. मैं आपको बता दूं, वेनेजुएला से रिसेंटली एक बोट निकली, यूएसए की एयरफोर्स गई, उस पर बॉम्बिंग करके आ गई, बोट डिस्ट्रॉय कर दी। अब उस बात को लेकर भी यूएसए में काफी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि उस बोट में जेन्युइनली ड्रग कार्टेल के मेंबर थे, ड्रग्स के लोग थे, या फिर कुछ You और। can capture it, then try to take out the information from them. That is not necessary. You can just bomb some ship according to your own knowledge. This is absolutely something we have to. और था, वी डोंट रियली नो। यूएसए सिंस उस कंट्री के अगेंस्ट वॉर पे नहीं है, परहैप्स यूएसए को उन लोगों को अरेस्ट कर लेना चाहिए था, कोर्ट में उनका ट्रायल होता, सबूत प्रस्तुत किए जाते और फिर उनको जो भी सजा होनी थी वो होती। ये आज के समय कई लोग पूछ रहे हैं यूएसए में कि जो ये नया यूएस आज के समय बन रहा है, कि जहां इनको लगता है कि ये जो बोट है यहाँ पे ड्रग्स आ रहे हैं, सीधा बोट को जाके बॉम्ब करके आते हैं, क्या ये ठीक है? क्योंकि आपने देखा होगा सोमालिया जो देश है वहां से बहुत सारे पायरेट्स निकलते हैं, कई बार कंट्रीज की शिप्स को कब्जा लेते हैं, मगर तब भी देशों ने अभी तक अपनी एयरफोर्स यूज करके सोमालिया के पायरेट्स को बॉम्ब करना नहीं शुरू किया, क्योंकि हमको पता नहीं है कौन पायरेट है, कौन मछुआरा है, कौन सिविलियन है। और इस बीबीसी के आर्टिकल में भी आप देखोगे ना, बहुत हंसी आती है।
इस पूरे आर्टिकल में आप देखोगे यहां पर ये कह रहे हैं मगर असली रीजन क्या है, मतलब व्हाट इज द रियल रीजन। पीपल आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट द रियल पर्पस। यूएस करना क्या चाहता है। I mean, देखिए लिटरली ना विकिपीडिया पे एक पूरा पेज बना हुआ है साल 2017 से, प्रपोज्ड यूएस इन्वेजन ऑफ वेनेजुएला। डोनाल्ड ट्रंप का सपना था 2017 से कि वेनेजुएला पर यूएस का कब्जा होना चाहिए, या तो वहां पर प्रो यूएस प्रेसिडेंट हो जो Either it's a pro-US US government, so they can take control over all those oil reserves, because those who control oil always be the first. तो बस यूएस गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉलो करे, या फिर वहां पर हो सकता है कि ट्रम्प के अंडर ये सीधा सीधा वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्व्स हैं उन पर कब्जा करने का प्रयास करे। ये ट्रम्प काफी बार बोल भी चुके हैं कि यूएसए को आराम से वेनेजुएला का जो सारा तेल है ये They will never let a country live in peace, no matter where they are. USA just trying to do something, these shitty things behind the scenes. Always try to do something like that. Always try to unstable a country where it shouldn't be. You can just look at all the Middle Eastern countries. It happens due to a USA reason. You can watch South African peoples. Everything happened because due to USA. Right now, world is unstable because of USA. I wouldn't say because of USA, but those power behind USA, those deals and those people, I don't know who they are. Nobody knows in the world who they are. Trying, even USA government also controlled by them, and funding both wars, something like that also. Those people are very powerful. Nobody knows in this world who they are, where they came from, how did they manage it. Even World War II, during World War II, they made a lot of profit out of it. Even in UK, those looted money from India, from other countries, where did it go? Nobody's know. Where did that much of money goes? Nobody knows, right? It's something people have to think about it carefully. Like how geopolitics works. If people really want to destroy your country, it won't take a sec to destroy your country, to change people's mind. Just inflated a country with millions of illegal immigration and gave them passport to your country's name, or passport ID cards related to your country. They will change the whole scenario of a country. You know it. In 2020, they tried to inflate it in India, almost 200 million illegal immigration with legally permission. Try to change people's value, try to change people's mind to change the regime. अपने अंडर ले लेना चाहिए था। ये अपने आप में काफी, मैं कहूंगा, आई ओपनिंग वीडियो है। ये डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो है जब अपना ये इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे। How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. बिल्कुल वेनेजुएला पास में है, हमारे कब्जा लेते, सारा ऑयल हमारा हो जाता। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप के सपने हैं, काफी मैं कहूंगा एम्बिशियस आदमी है ये। और He is very ambitious. He is trying to make Canada its 51 state. Wow. वेनेजुएला को कब्जाना आसान नहीं होगा। यूएस की जो मिलिट्री है आज के समय, वैसे मैं अगर आपको मैप में दिखाऊं कि यूएसए ने किस तरीके से धीरे धीरे वेनेजुएला के आसपास मिलिट्री डिप्लॉय करनी स्टार्ट कर दी है, यूल बी सरप्राइज्ड। ये इधर आप देख पाओगे, यूएस मीडिया ने ये मैप पोस्ट किया है अपनी वेबसाइट पर। इधर ये आप देख पाओगे, यहाँ पर ये इधर यूएसए है, ये नीचे यहाँ पर वेनेजुएला है, और इधर आप देख पाओगे यूएसए की मिलिट्री यहाँ पर इस तरीके से डिप्लॉयड है। यूएसएस सैमसन यहाँ पे है, ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है, ये पनामा में डिप्लॉयड है। कल को आप मान लीजिए वेनेजुएला का जो अरूबा का एरिया है वहां पे अटैक करना है तो सीधा यहाँ से मिसाइल्स आएंगे। फिर यूएसएस लेक आयर, यूएसएस ग्रेवली, ये इधर यहाँ पे अपनी सबमरीन्स भी डिप्लॉय कर दी है। जबकि वेनेजुएला की जो नेवी है इट इज वेरी वीक। ये एक क्लियर कट इन्वेजन का एंगल यहाँ पर लग रहा है। अब यूएस का बोलना ये है कि ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेनेजुएला से ना कभी कभी शिप में ड्रग्स लेकर ये लोग यूएसए में आते हैं, तो उन ड्रग्स को हमको रोकना है। देखिए आप जानते हैं, मैं जानता हूँ
ये गाइडेड For drugs, this many military ship won't require. If you are talking about drugs, it won't require. But it is something you wanted from Venezuela. That's why you are trying to do all of these efforts, all of this military budget. मिसाइल डिस्ट्रॉयर और इतनी सारी सबमरीन्स और F-35 फाइटर जेट, ये कोई ड्रग्स की शिप को रोकने के लिए नहीं होते। यहाँ पे इवेंचुअली डोनाल्ड ट्रंप का सीधा सीधा प्लान यही है कि निकोलस मदुरो की सरकार को खत्म करते हैं, टेक ओवर वेनेजुएला नाउ। ये वेनेजुएला को कब्जा पाएंगे, नहीं कब्जा पाएंगे, ये अलग बात है। अभी के लिए बिल्कुल ट्रंप ने वार्निंग दी है वेनेजुएला को कि इनके जो F-16 फाइटर जेट्स हैं, जी हाँ, वेनेजुएला के पास एक पुराने जमाने के F-16 फाइटर जेट्स हैं। यूएसए ने कहा है कि इन फाइटर जेट्स को बिल्कुल ये लोग शूट डाउन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, यूएसए का मिलिट्री बिल्डअप बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। डिस्ट्रॉयर, क्रूज मिसाइल, सबमरीन, फाइटर जेट, रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, ड्रोन, ये सभी एक देश तभी डिप्लॉय करता है जब प्लान होता है कि किसी एक कंट्री को अटैक करना है। नाउ अगेन, मुझे पता नहीं कि कोई यहाँ पर वॉर स्टार्ट होगी या फिर यूएसए के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वेनेजुएला यूएसए के सामने एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर देश है। आई मीन यूएस सिंपली लॉन्ग रेंज से ना आराम से मिसाइल्स बरसा के वेनेजुएला पे तबाही मचा सकता है। इट कैन बी दैट ईजी। कुछ वेनेजुएला कर नहीं पाएगा। बताया जाता है वेनेजुएला में रशियन सोल्जर्स है, बट यूएसए के पास इतनी ज्यादा मिलिट्री प्रोवेंस और वेनेजुएला यूएस के इतना जरा करीब भी है कि मुझे लगता नहीं है कि रशियन सोल्जर्स भी यहाँ पे जरा कुछ कर पाएंगे, अनलेस सडनली चाइना यहाँ पे एंट्री ले लेता है और चाइना हेल्प करना स्टार्ट कर देता है वेनेजुएला का। इंटरेस्टिंगली, ब्राजील के एक एमपी ने रिसेंटली ये कहा है कि ब्रिक्स देशों को वेनेजुएला की रक्षा करनी होगी। ये इधर आप देख पाओगे, ब्राजील के लॉ मेकर्स की स्टेटमेंट आ रही है कि ब्रिक्स को आज के समय खड़ा होना होगा। यूएसए का थ्रेट है साउथ अमेरिका को और ब्लॉक को एक यूनाइटेड रिस्पॉन्स देना होगा टू यूएस मिलिट्री बिल्डअप नियर वेनेजुएला। I think it's important for the group to react to Trump's increasing threats against Venezuela. I see them as a threat to the entire Latin America now. ऐसी बातें देखिए अभी बोली जा रही है, बट आई बिलीव जब तक यूएस स्ट्राइक स्टार्ट करता नहीं है ना, तब तक बाकी देशों की तरफ से ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और टू बी ऑनेस्ट, वेनेजुएला बाकी ब्रिक्स कंट्री से इतना दूर है ना, मुझे जेन्युइनली लगता नहीं है कि वेनेजुएला को कोई बचाने के लिए यहाँ पे आने वाला है। आई मीन, And that's true. Nobody is coming to save Venezuela because all of these countries are living here in Asia, in Middle East, something like that. Nobody will able to protect West from USA and Venezuela also. I don't know how the hell Brazil even added to BRICS. How the hell did they able to manage Brazil to join in BRICS with BRICS? Like, first of all, it was just a member of RIC, then it started with Brazil BRICS. It was something very unnatural for me. Like, Brazil is the only, like in West, or should I say something like that, only country who's with like BRICS. All ईरान others को भी are आप अगर just देखें, एक टाइम पर ईरान के साथ यूएस जो भी कुछ भी कर रहा था, इसराइल जितनी भी बॉम्बिंग कर रहा था, चाइना या रशिया डायरेक्टली ईरान की सपोर्ट में नहीं आए थे। सो इस वक्त वेनेजुएला काफ़ी हद तक डोनाल्ड ट्रंप के रहम पे है। ट्रंप का अगर मान लीजिए मन किया कि अब इट्स टाइम टू टेक आउट वेनेजुएला, तो बहुत ही ज़्यादा अगली सीन्स आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, डू यू थिंक इंडिया शुड कमेंट ऑन दिस इशू, या फिर आपका यहाँ पे ये there is no need to comment on this issue. If we want to, we will comment this issue after something happening. मानना है चुपचाप बस दूर से बैठकर देखो, वेनेजुएला से कोई रिलेशन नहीं है हमारा। ऑयल हम खरीदते थे, अब थोड़ा सा खरीदना ऑयल वैसे ही कम कर रखा है। जो वेनेजुएला के साथ होगा वो काफी हद तक ट्रंप ही डिसाइड करेंगे। बाकी हाँ, ये जरूर है, ट्रंप यूएसए को एक बहुत ही बड़ी वॉर में उलझा सकते हैं और यूएस के रिलेशन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के साथ कई दशकों तक खराब कर सकते हैं। दैट कैन वेरी मच हैपन। कुछ अपडेट्स होती हैं ऑब्वियसली, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। जैसे जैसे भारत एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा। Okay, so let's talk about the comment section also.
If there is all that continued democracy, yeah, we should have also talked about Venezuela. If the West is concerned about the people of Ukraine, then why not about Western people? Like they, how should I say? First of all, Nobel Peace Prize was never made for these clowns. Even in past history, we already seen those prizes they pay to have America as an enemy stranger. Yeah, we lost against Vietnam, we lost against Afghanistan. Now it's your time, Venezuela. Yeah, in Afghanistan, their military didn't hold up that much. They were they completely well. It's like they were completely failure in Afghanistan. This guy logic sound very reasonable. China can also put something unreasonable like this, like they are something doing with China and its property. So that's why we are hitting. Just like now, USA trying to frame all these peoples also without any reasons, without any how should I say, like without any proofs, like saying something like they are drug dealer without knowing and bombing those people without finding out the reason who are those people, where did it came from. When there is a, it's not about America also. They try to hold this power with the help of America because they know America is the only one country in the world right now who has largest military and largest economy. That's why all those people trying to take those things out, and if China becomes one, then it will be a something like war can happen, can might as well happen. US and China, this will be the out of picture if China able to do it. Okay, so yeah, that's it for today. Peace out.